Welcome to VLearn. This is session number 1 of Multimedia Computing. In this session, we are going to cover following topics: multimedia introduction, where to use multimedia, what you need in multimedia, why digital representation, structure of a multimedia system. First is multimedia intro. Multimedia refers to the combined use of text, graphics, animation, sound, and video to present information to the user via the computer. There is another definition which says that multimedia is just a combination of text, graphics, animations, audio, and video. Multi is due to the uses of more than one media, that is the multimedia. मल्टीमीडिया के अंदर दो वर्ड्स हैं, मल्टी प्लस मीडिया. मल्टी मीन्स मैनी एंड मीडिया मीन्स मीडियम. अपनी बात कहने के डिफरेंट वेज या फिर किस मीडियम का आप यूज़ करते हैं उसको हम एक साथ कंबाइन करके बोल देते हैं मल्टीमीडिया. इट कैन बी योर टेक्स्ट, graphics, animation, sounds, and video. These all are your medium, and when you combine all these together, it becomes multimedia. Now, there are some quotations related to multimedia, like multimedia excites eyes, ears, fingertips, and most importantly, the head. Secondly, to use technology and imagination to gain empowerment and freedom for ideas. Thirdly, definition of multimedia is a simple one. Making it work can be complicated. ये कुछ ऐसी कोटेशंस है जो मल्टीमीडिया के रिलेशंस में हम नॉर्मली सुनते रहते हैं. लाइक मल्टीमीडिया एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम अपनी आँखों को, कानों को, फिंगर्स को, इवन अपने हेड को भी रेगुलेट करते हैं. लाइक आप टेक्स्ट है तो आप देख रहे हैं, वीडियो है तो भी आप विजुलाइज कर रहे हैं, ऑडियो है सुन रहे हैं, फिंगर्स की मूवमेंट यूज़ करके ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे हैं. सो मल्टीमीडिया एक्सरसाइज ऑल योर बॉडी कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग आइज, ईयर्स, फिंगर टिप्स एंड हेड. इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अपनी इमेजिनेशन पावर को भी एक्सटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया गिव्स अस. मल्टीमीडिया का यूसेज आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं और वो आपको क्या प्रोवाइड करती है. The uses of multimedia gives us the following ideas. First one is to know how to use text and fonts. Secondly, how to make and edit colorful graphic images. Thirdly, how to record and edit digital sounds. How to animate graphic images and play it back. And lastly, how to store video clips and play it back into movies. सारे मीडिया से डील करना अगर आपको सीखना है तो बेस्ट वे है मल्टीमीडिया, क्योंकि इसमें आप टेक्स्ट से भी रिलेट करते हैं, ऑडियो से भी और वीडियो से भी. उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर जो भी चेंजेस आप यूज़ करना चाहें, अप्लाई करना चाहें, वो मल्टीमीडिया में पॉसिबल है. लाइक आपको अपनी ग्राफिक्स को कलरफुल इफेक्ट देना है, साउंड आपने रिकॉर्ड कर रखी है, उसको पर्टिकुलर मोमेंट पे एडिट करना है. एंड सेम फॉर योर graphical images which you want to make them an animated images. Now, there are some concepts related to multimedia. Multimedia is a combination of text, graphics, sounds, animations, and video elements. So, when we allow an end user, that is the viewer of a multimedia project, to control what elements are delivered and when, we call it as interactive multimedia. जब भी कभी भी यूज़र इंटरैक्ट करता है उस प्रोजेक्ट के साथ जिसके अंदर आपने मल्टीमीडिया को यूज़ किया है, इट विल बिकम इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया. इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया मीन्स यूज़र भी उस पर्टिकुलर फेस के साथ, इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिक नीड. नेक्स्ट इज़ योर हाइपरमीडिया. व्हेन वी प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर ऑफ लिंक्ड एलिमेंट्स टुगेदर विच द यूज़र कैन नेविगेट, इंटरैक्ट मल्टीमीडिया बिकम्स हाइपरमीडिया. इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया, इन दोनों में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है. इंटरैक्टिव में जस्ट इंटरैक्शन मैटर्स एंड हाइपर मीडिया में हम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जो कि लिंक्ड एलिमेंट का होता है, जिससे कि यूज़र एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस ट्रैवल करता है. देन इज़ योर मल्टीमीडिया डेवलपर्स. द पर्सन हु वीव्स अ मल्टीमीडिया इनटू अ मीनिंगफुल टेप स्ट्राइप्स आर योर मल्टीमीडिया डेवलपर्स. The software, messages, content presented on a computer together constitutes a multimedia project. मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में वो सारे सॉफ्टवेयर जो आपने यूज़ किए हैं, मैसेजेस जिन्हें आप डिलीवर कर रहे हैं अपने कंटेंट के थ्रू, ये सब मिलके एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को
बनाते हैं. If a project will be shipped or sold to a customer, typically in a box with or without instructions, we call it as multimedia title. A multimedia project need not to be interactive to be called multimedia. User can sit back and watch it just like they do watching a movie or a television. In such cases, we call the project as linear. Then is your medium. Media refers to the type of information or type of information carriers. In general, one describes medium as a means for distribution and presentation of information. For an example of medium are alphanumeric data, images, audio, and video. There are many ways to classify media. Common classifications are based on physical formats and media relationships with time and different criteria like perception, representation, presentation, storage, transmissions, and information exchange. Now, there are some classifications related to medium. Under the classifications of physical formats and media relationship with time, the media is classified based on whether there is a time dimension to the medium or not. Under this, we have two dimensions or two classes. First one is your static media, another one is dynamic media. Static media do not have a time dimension and their content and meaning do not depend on the presentation time. Static media is also known as discrete media. It includes alphanumeric data, graphics, and still images. Next is your dynamic media. Dynamic media have a time dimension and their meanings with their correctness depending on the rate at which they are presented. Dynamic media include animations, audio, and video. These are the mediums which they used for their processing. These media can have their intrinsic unit, interval, or even rate also. Medium or media can also be classified with respect to different criterias. Criterias like perceptions, representation, presentation, storage, transmission, information interchange. Firstly is perception medium. The perception media helps human to sense their environment. परसेप्शन इज़ जस्ट जब हम अपने एनवायरनमेंट को सेंस करके उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेक करते हैं कि हमें उसके अकॉर्डिंग कैसे एक्ट करना है. लाइक देयर इज़ अ प्राइम डिफरेंस बिटवीन सीइंग एंड हियरिंग द इंफॉर्मेशन व्हेन यूजिंग अ कंप्यूटर. For the perception of information through seeing, the visual media such as text, images, videos are used. For the perception of information through hearing, auditory media such as your music, noise and speech are relevant. So depend करता है कि आप कौन से environment के अंदर अपने message को convey करना चाहते हैं. According to that, media will be changed. Second point is representation. Representation medium are characterized by internal computer representation of information. Like a text character is coded in ASCII code. Graphics are coding according to their standard JKS. JKS is graphics kernel system. An audio stream can be represented simply by a PCM. PCM is pulse coding method. An image can be coded in JPG or GIF format. Third classification criteria is presentation. How you present your information. Presentation media refers to the tools and devices for the input and output of information. Like it can be your paper, screen, speakers and etc. Next is storage medium. Storage media refers to a data carrier which enables storage of information. The various medias are microfilms, floppy disks, hard disks and many more. Then transmission is another classification for your media. In transmission media, we characterize different information carriers that enables the continuous data transmission. It can be through wires, and in wire category we have different wires like coaxials, fiber optics, and as well as free airspace transmissions. Next criteria is information exchange medium. The information exchange medium includes all the information carriers for transmission like all storage and transmission media. तो ये कुछ ऐसी क्लासिफिकेशंस हैं जिन पे बेस्ड हम अपने मीडिया को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. नाउ
There are some properties related to a multimedia system. First property is combination of media. कम्बिनेशन ऑफ मीडिया मीन्स हमें हर एक मीडिया को यूज़ करना है, कंबाइन करना है जस्ट टू जस्टिफाई आवर यूसेज ऑफ मल्टीमीडिया टर्म. A simple text processing program with incorporated images is often known as multimedia application, as two medias are processed during one program. Second property says independence. An important aspect of different media is their level of independence from each other. As there is a request for independence of different media, but multimedia may require several levels of interdependencies. Like the media are dependent or independent depends on your application itself. For example, video recorder stores audio and video information, but there is an inherently tight connection between these two media. Like अगर आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी है तो ऐसा नहीं है कि आप जस्ट वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और साउंड लेवल आपके लिए कोई मैटर नहीं करता. और मोर ओवर जब वीडियो में चल रही है, स्टिल मूवी चल रही है, जो डायलॉग्स आने चाहिए वो उस मोमेंट पे नहीं आ रहे जो पर्टिकुलर पार्ट आप उस डायलॉग के लिए बनाए. सो इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, पर बीच बीच में वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं. कनेक्शन होता है हर एक मीडिया में क्योंकि हम एक मल्टीमीडिया टर्म यूज़ कर रहे हैं. Next property is computer supported integration. The multimedia system should support all the medias that we are using, should provide the possibility of combination of media in any arbitrary forms. For an example, in combinational systems, a text message can be sent to other user, but a multimedia system with a high level of integration allow you this function for audio message or even for your combination of audio and text. Next property is communication systems. Communication capable multimedia system must be approached. A reason for this is that the most of the today's computer are interconnected, and considering multimedia functions from only the local processing viewpoint would be restrictions. Another reason is that in distributed environments, this environment enables particularly interesting in multimedia applications. So these are some properties related to a multimedia system. Now we have classes of multimedia system. Multimedia systems are classified into standalone and distributed systems. Now, standalone systems. Standalone systems use dedicated system resources. The amount of multimedia information may be limited and multimedia data communication is not supportive. स्टैंड सिस्टम्स के अंदर अगर हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो कोरली हम उस सिस्टम पे जो यूज़ कर रहे हैं वो हमें एक डेडिकेटेड रिसोर्स चाहिए, लाइक हम उसे शेयर नहीं कर सकते. बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी आर डीलिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स शेयर्स बोथ द सिस्टम रिसोर्सेज एंड एज वेल एज योर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज which can support communication between the users. Now, digital systems can further classified into 4 classes. First one is conversational services. Conversational services implies interaction between a human user and another human user or a system. This class includes interpersonal services such as your video conference and video phoning. जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो नॉर्मली हम एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक कन्वर्सेशनल सर्विस बन जाती है. सेकेंड सर्विस इज मैसेजिंग सर्विसेज. इट इज़ रिलेटेड टू योर asynchronous exchange of multimedia data through any email boxes. Then is your retrieval services. Retrieval services covers all type of access to multimedia information servers. Typically, the user sends a request to the server. The requested information is delivered to the user in a real time. One example of this service is VOD, that is video on demand. आपने कुछ डिमांड किया सर्वर से और इमीडिएटली सर्वर ने आपको उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स बैक किया. Last class is distribution service. Distribution service covers services where the information is distributed on the intimated of a server. For an example, TV program broadcast. They require real-time multimedia data transmission in only one direction. So these are some classes related to your multimedia system. Now,
Where to use multimedia? You can see there are a variety of applications area which uses multimedia like your business, schools, home, public places, virtual reality, IoT, that is your information on demand, telemedicine, cooperative work. These all are area in which we use multimedia. We discuss one by one each of this area and the uses of multimedia in that particular area. Firstly, we discuss the use of multimedia in businesses. Business application for multimedia includes presentations, training, marketing, advertising, product demos, databases, and network communication. Voicemail, video conferencing are also provided on many local and WAN, that is wide area network. When presentations we made, the most presentation software packages have facilitated to add us some audio and video clips to your usual slideshows of graphics and text material. Multimedia in training has become widespread. Flight attendants learn to manage international tourism and security through simulations. Multimedia around your office has become very commonplace like video conferencing. तो बिजनेस एरिया में मल्टीमीडिया अब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है. आपको प्रेजेंटेशंस देनी है, अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, किसी को ये सिखाना है कि आपको पर्टिकुलर टास्क कैसे परफॉर्म करना है. उसके लिए हम वीडियोस यूज़ करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं, वीडियोस की हेल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, अपनी बात को एक साथ बाकी सबके साथ कन्वे करने के लिए, ये लाइक ग्रुप डिस्कशन करने के लिए एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे या फिर एक पर्टिकुलर टास्क पे. Next is your multimedia in schools. Schools are perhaps the most needy destination for multimedia. As traditional teaching methods are changed, teachers are becoming more like guides and mentors along a learning path, not the primary provider of information and understanding the students. Not teachers become the core of the teaching and learning process. There are various advanced electronic teaching tools like which are designing and developed due to this multimedia only. अब प्रेजेंटेशन सेशंस क्रिएट किए जाते हैं स्कूल्स में टू स्टूडेंट्स को ये कम्युनिकेट करने के लिए कि पर्टिकुलर इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर हम एक लेक्चर दे रहे हैं सिंपल, दैट विल बी नॉट मोर इफेक्टिव व्हेन वी आर गिविंग दिस दैम अ प्रेजेंटेशन, अ कलरफुल और ऑडियो विच कंटेन्स योर ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स. इट इज़ मोर इफेक्टिव देन योर टेक्स्ट मीडिया. Then multimedia at your home and public places. There are most multimedia projects which reach at your home like television sets, monitors with built-in interactive user inputs. User at home will download number of new games, trips and safaris to destination around the world. And as concerned to public places, in hotels, trains, stations, shopping malls, museums, multimedia are becoming available at standalone terminal to provide the information and help to the users. In hotel we get a nearby restaurants, maps of the city, airline schedules. जब भी हमें कहीं पे होटल पे अप्रोच करते हैं, लाइक हम एक सिटी से बाहर गए और हम उस सिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आजकल हम मल्टीमीडिया का यूज़ करके डिफरेंट मैप्स व्यू कर सकते हैं, कोई भी नियर बाय रेस्टोरेंट के बारे में होटल से पता लगा सकते हैं. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस मल्टीमीडिया ओनली. देन इज़ virtual reality. Merchant marine officer training schools, computer control simulations teach the intricate loading and unloading of the oil tankers and container ships. This is the example of your virtual reality. Specialized public games have been built recently to offer this virtual reality compact and flying experience for price. Then is video on demand or movie on demand. We call them as VOD also. When we watch TV programs and movies, we can't control the time we want to watch them. But in VOD service, it is developed to overcome this limitation and provide other capabilities. Like some distinct features related to VOD are, we don't have to leave home to watch our favorite video. On advanced TV, it is connected to video service through an advanced network. All we need to do is just to dial a number and select the video through a user-friendly menu on the TV screen. Another one is we can watch our favorite videos, movies anytime we want.
We can also pause and fast forward backward. We may also be able to search for a particular scene also. We have granted high quality because video is stored in a digital form. The quality will be degraded if we increased viewing. So these are some distinct features which are related to VOD. Then IOD, that is information on demand. A similar system to VOD is your IOD, but the major difference is that IOD stores other type of information as well as video. To users, it is large versatile library. The most important ability of this system is indexing and the searching the vast amount of multimedia information. The IOD systems have some applications which are including acting as a general encyclopedia of information, providing home shopping services, providing current information on weathers, public transport time, and also the www, that is your World Wide Web, can be seen as a primitive IOD system. Next area is telemedicine. Telemedicine is an important multimedia applications, especially when there is a case of emergency and remote location. In telemedicines, all the patient records are recorded or stored electronically. Medical instruments and equipments are connected through a multimedia network, and then telemedicine provides you the following activities like instant consultation with the remote medical experts, access to patient records, worldwide access of information, and many more. Then we have video phones and video conferencing. It allows dispersed users to carry out effective communication through audio and video transmissions. जब भी हम वीडियो फ़ोन्स यूज़ करते हैं उससे हमारा कम्युनिकेशन ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशंस के थ्रू हम डिस्पर्स यूज़र लाइक वो यूज़र्स जो एक प्लेस पे ना हो के अलग अलग प्लेसेस पे हैं हम उनसे एक कनेक्शन मेंटेन कर सकते हैं. Most current video conference systems use dedicated specific machines and even the circuit switch network also. Video phones will be the common and as a current phones. आजकल हम जब भी करंटली फ़ोन्स के लिए यूज़ करते हैं तो हमारा सबसे पहला टारगेट वीडियो फ़ोन्स होता है जिससे कि हमें बेनिफिट मिल सके अपने काम को परफॉर्म करने का. Next area is cooperative work. In this, a sophisticated video conference system will be support this. People far apart will be able to work on the same project through any transparent multimedia information transmission among them. Then, what do you need for the multimedia? The first is hardware, second is software, third is creativity, and lastly is the organization. Now we first discuss hardware. मल्टीमीडिया कंप्यूटर रिक्वायर सम मिनिमल स्पेसिफिकेशंस टू वर्क लाइक कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो या फिर हम ये कह सकते हैं एक बेसिक नीड होती है मल्टीमीडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हमें अपने प्लेटफॉर्म में मल्टीमीडिया को स्टोर करवाना है. सो नॉर्मली हम जिस पीसी पर वर्क कर रहे हैं और हम वो कहते हैं कि एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर है हम उसे कह सकते हैं मल्टीमीडिया पीसी प्लेटफॉर्म. In this, there are currently 3 MPS, that is Multimedia Personal Computer Standards, Level 1, Level 2 and Level 3. Here we are referring you the Level 3 specifications. Specifications means क्या क्या minimum requirements हैं अगर आपको अपने मल्टीमीडिया कंप्यूटर को मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सपोर्ट करवानी है अपने सिस्टम में तो क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है आपके सिस्टम की रिलेटेड टू योर हार्डवेयर. फर्स्ट रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर 75 megahertz Pentium processor is a minimum requirement. RAM is minimum of 8 GB. Hard drive minimum of 540 GB. CD-ROM must be there and with a sustained transfer rate of 600 k per second. In audio related, 16-bit digital sound is required. Graphic performance, color space conversion, scaling capability, direct access to frame buffer for video enabled graphic subsystems with a resolution of 352 x 240 at 30 frequency per second. And for video playback, the hardware and software which supports MPEG-1. So these are some hardware requirements. Including this, we also need a face or interface through which a user can interact with your hardware. So for user input, 101 key IBM style keyboard is required. And as per as system software is concerned, Windows 3.11, Windows 95 and onwards all are supported your multimedia applications. Now comes the software part. The basic tool set for multimedia
projects contains one or more authoring systems and various editing applications for text, images, sounds, and motion videos. A few additional applications are also useful for capturing images from the scenes, translating file formats, and moving files among computers. There are some authoring tools. Authoring tools एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम अपने मल्टीमीडिया के साथ इंटरेक्ट करें, लाइक टू एडिट दैम और टू क्रिएट दैम. So there are some example like painting and drawing tools, 3D modeling and animation tools, image editing tools, sound editing programs, animation, videos, and digital movies. Next is your creativity and organization. Before coming up with a multimedia project, we must first develop a sense of its scope and content. The project should take shape in your head and you should think through how to put it for viewers. क्रिएटिविटी एक ऐसा पॉइंट है जो मल्टीमीडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. लाइक जब तक आप क्रिएटिव नहीं हैं आप अपने मीडियाज़ को यूज़ नहीं कर सकते. आपको पता है कि आप ऑडियो यूज़ कर सकते हैं, वीडियो यूज़ कर सकते हैं, बट क्रिएटिवनेस अगर आपके अंदर होगी तो वो चीज़ और भी ज़्यादा इफेक्टिवली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. And as far as your organization is concerned, it's essential that you develop an organization's or organized outlook and a plan for your project that rationally details the skills, time, budget, tools and resources at one hand. Organization का मतलब होता है कि आप कितने organized हैं अपने काम में. और अगर आप मल्टीमीडिया एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो यू मस्ट ऑर्गेनाइज्ड योर सेल्फ. लाइक एक प्लान होना चाहिए वेल सेट जिसके अंदर आप सारी स्किल्स लिखेंगे, वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, वो रिसोर्सेज जो आपकी जिनके आपको नीड है, टाइम क्या होगा, कितने टाइम पीरियड तक आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, व्हाट विल बी द बजट एंड व्हाट विल बी योर टूल. नेक्स्ट इज योर व्हाई डिजिटल रिप्रेजेंटेशन. Multimedia use digital computers. All the building blocks of multimedia is represented in digital only. Digital means ones and zero, that is discontinuous. There are a number of advantages for representing them in a digital form. Like, firstly, the computer system that we are using for multimedia only handle the digital data. When they are in digital form, images, audio, videos can be easily handled. Secondly, it is easier to interact with digital media by using your computer system because computer deals in digital. Thirdly, if communication security is required, it is easier to encrypt the digital signals than to encrypt an analog signal. जब भी हमें encryptions करनी होती है, जो normally एक concern होता है कि आपको security provide करनी है, तो उस केस में आपका digital signals ज़्यादा जल्दी encrypt होते हैं. Then digital system is more reliable and digital representation is more tolerant to noise than its analog counterpart. So these are some characteristics which digital representation provides you. Then this is your structure of multimedia system. In this you can see there are 3 layers. First is your device layer. In device layer you have your storage, compression, networks, audio, graphics and video. Normally डिवाइस लेयर के अंदर वो लेयर है जिसके अंदर आपने डिवाइस को जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं वो मेंशन कर सकते हैं. देन इज़ योर सिस्टम लेयर. इन सिस्टम लेयर आपके सिस्टम में क्या डाटाबेस होना चाहिए, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उससे कंसर्न होता है. एंड लास्टली यू हैव योर एप्लीकेशन लेयर. इन एप्लीकेशन लेयर आप कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन को यूज़ करके आपने अपना इंटरफेस बनाया है, कौन सी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग को आप यूज़ करके अपने यूज़र तक उस मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को पहुंचा रहे हैं. एंड इन अमंग ऑल दिस लेयर देयर इज मस्ट बी अ सिंक्रोनाइज्ड फैक्टर. Do it yourself. First question is explain some multimedia application. Secondly, why we need digital representation in multimedia. Thank you. Happy learning. We learning.